Hello students, good morning. Today we will do the next questions of exercise 6.5, that is problem based questions. So we have done up to 21 questions. Question number 21 we have done. Now we are doing question number 22, right? Let us read it. A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and other into a circle. What should be the length of two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? Means you have to show that the combined area of square and circle is minimum. Okay, so let us do this. Firstly we have a 28 meter wire. We have 28 meter wire, right? This is 28 meter. So let one piece is x and other piece is 28 minus x, right? Because the length is 28 meter. फर्स्ट पीस, एक पीस का हमने बना दिया स्क्वायर और दूसरे पीस का हमने बना दिया सर्कल, राइट? लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज a and let the radius of this is r, right? Means when we break this wire of 28 meter into two pieces, one piece it turns to square and other piece to circle. मतलब एक का स्क्वायर बना दिया, एक का सर्कल बना दिया मोड़ करके. Now it means the perimeter of the square is x. It means the perimeter of the square, that is 4a. 4a is equal to x, therefore the side of the square is x by 4, right? And the circumference, it is 2 pi r, it is equal to 28 minus x. So you have the value of r is 28 minus x over 2 pi. So these are the values of r and a. A is the side of the circle and r with the radius of the a with the side of the square and r with the radius of the circle. Now you have to find the combined area. You have to show that the combined area is minimum. So as you know, the combined area of the square is a square and plus area of this is area of circle is pi r square, right? Now we have this area, combined area. Now this function you have to put the value of a here and r here. So what will we get? a becomes this is x square by 16 and this becomes pi r square, means 28 minus x square over 4 pi square. This pi is cancelled, one pi is cancelled, and we have the combined area is x square by 16 plus 28 minus x whole square over 4 pi, right? So this is the function, you have to minimize it. So to minimize it, let us find the derivative of this function. When we differentiate this a with respect to x, what will we get? It is 2x over 16 plus its derivative is 2 into 28 minus x over 4 pi into derivative of 28 minus x, that is minus 1. So you have this value, this is 8. So we have a x upon 8 minus 28 minus x over 2 pi. Now as you know,
your next step for the second derivative test is, what is the next step? You have to put this equal to 0. So when we put dA over dx equal to 0, what will we get? We have x by 8 is equal to 28 minus x over 2 pi. Right? When we simplify this, I am cross multiplying this. Firstly, this 2 will be cancelled with this 8. So we have, when we cross multiply, we get pi x is equal to, this is 8 fours the 32, and this is 112, I think. Go to the 8 3 11 minus 4x. So this becomes पाई प्लस, मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ और x कॉमन ले रहा हूँ. सो मेरे पास व्हाट विल वी गेट? वी हैव दिस वैल्यू 112 ओवर पाई प्लस 4. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. तो वन पीस ऑफ लेंथ ऑफ द वन पीस ऑफ द वायर इज दिस, x equal to 112 over pi plus 4, and when we find the next piece, we have the length. This is the length of one piece, right? Now length of other piece is, length of other piece of wire is 28 minus x, that is 28 minus 112 over 5 plus 4. When we simplify it, we have this LCM is pi plus 4, and this is 28 pi plus this is 112 minus 112. This is cancelled out, so we have the result, that is 28 pi over pi plus 4. So this is the length of the other piece. So these are the dimensions, these are the length of the pieces, and when you, now what is the next step? Next step means you have to differentiate it again, means to show it a minimum, right? So let us differentiate it again. When we differentiate it again, d square a over dx square, its value is 1 by 8 and its answer is 1 over 2 pi. So which is always positive? As you see, this derivative, double derivative is positive for all points. So that's why this, therefore this combined area is minimum, right? So इसमें आपको क्या करना है? इसमें तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. सबसे पहले आपको फंक्शन बनाना है जिसको आपने मिनिमाइज करना है. आफ्टर दैट you have to differentiate it. After that, then equate that derivative equal to 0, then find the value critical point, right? After finding the critical point, you have to differentiate it again, find the double derivative, and check the sign of the double derivative, that is positive, so that this area is minimum, right? So this is the question number 22. Now let us do the question number 23 here. This question is also most important. These all questions are very, very important. So try to understand. The question number 23 is, prove that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8 by 27 of volume of the sphere. So you have to prove that the volume of largest cone, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन का मतलब है आपने कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, और जो कि स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है और स्फीयर की रेडियस आपको गिवन है और इसका वॉल्यूम जो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है. सो लेट अस ड्रॉ फर्स्टली द फिगर. लेट दिस इज अ स्फीयर and it is a right circular cone, so inscribe it.
this is the right circular cone inside the sphere. Now what are the dimensions? This is the center. This is the radius of the sphere that is given, that is r. Let us join this. This is also the radius, means this is also the value of r, and this is the value. Let the small r be the radius of the cone and capital R be the radius of the sphere. Right? Now let this is x. This is the x. So this, let it be O. This is A. This is B. So in right angle triangle, OA is x, right? OP, this, let this is P point. OP is R and OB is also R. So you have to prove that the volume is maximum, largest volume. So as we know, volume of the cone is 1 by 3 pi r square h, right? You have to show this function, this volume maximum. So before differentiate it, you have to make it in one variable. So I am taking this triangle OAB, in triangle OAB, use the Pythagoras theorem here, and we have x square plus r square equal to capital R square. You have this, the value of small r square is capital R square minus x square. So, and what is this height? This height is r plus x, right? Height of the cone, that is r plus x, means put h is equal to r plus x, and the value of r square is r square minus x square. So we have the volume 1 by 3 pi r square, means r square minus x square into h की वैल्यू फिल कर दी हमने r plus x, राइट? नाउ अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें अब आपको पता लग गया कि एक वेरिएबल में फंक्शन आ चुका है, यानी कि x में आ चुका है. सो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको, तो ये मेरे पास आ जाता है 1 by 3 पाई, दिस इज r माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट? सो now we can differentiate it with respect to x, dv over dx. I am taking this 1 by 3 pi outside and I am doing the by it is product rule. So by using product rule, this is bracket start, first as it is, इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू आर प्लस एक्स, फिर आएगा प्लस, सेकेंड एज इट इज आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव होगा -1, राइट? सो व्हेन वी टेक आर प्लस एक्स कॉमन, 1 by 3 pi, this is the value of dv over dx actually. So 1 by 3 pi r plus x is common here, and inside the bracket we have 2r minus 2x minus r minus x, right? So when we simplify this, we have 1 by 3 pi r plus x, this is r minus 3x, right? So this is the derivative of v, right? So now equate, when we equate this to 0, we have dv over dx equal to 0 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास दो फैक्टर है, तो एक से मेरे पास x की वैल्यू -r आएगी, जो कि हम रिजेक्ट कर देंगे. क्यों रिजेक्ट करेंगे? बिकॉज इट कैन बी नेगेटिव, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू r/3 आ जाएगी, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, राइट? सो now differentiate it again.
when we differentiate it again, you have the value 1 by 3 pi. I think it is r plus x into r minus 3x. I think this is the value of dv over dx. Now when we differentiate it again, means you have to find double derivative. So its double derivative is, again we can use the product rule here. 1 by 3 pi as it is, first as it is r plus x, इसका डेरिवेटिव -3 and plus second as it is r minus 3x is as it is and its derivative is 1. So we have, जब हम इसमें सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू r अपॉन 3 फिल करेंगे तो मेरे पास हम चेक करेंगे व्हाट इज द साइन ऑफ दिस डबल डेरिवेटिव. सो व्हेन वी पुट this is -3 and this is r plus r by 3 plus r minus r, that is 0, right? So this whole term is negative. So what does it mean? Negative means, therefore it shows that volume is maximum, largest. So now one more thing, that is you have to prove that जो इसका वॉल्यूम है, जो कोन का वॉल्यूम है, वो स्फीयर के वॉल्यूम के से 8/27 टाइम्स है. सो हम क्या करेंगे, we have to put this d volume. What is the value of v? What was the value of v? We have 1 by 3 pi and I think it is r minus x into r plus x whole square. यही थी ना आपके पास वैल्यू. तो ये किसकी वैल्यू थी? वॉल्यूम ऑफ कोन. अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे. सो वी हैव वॉल्यूम ऑफ कोन इज, सो अवर finally we have volume of cone is 1 by 3 pi r minus r by 3 and this is r plus r by 3 raised to the power 2. And when we simplify this, we have, this is 2r by 3 and this is 4r, means 16r square by 9. So when we multiplying these, we have this is r cube, right? So this is 32 pi r cube by 81. Now 8/27 कॉमन लेंगे तो मेरे पास अंदर बच जाएगा 4/3 pi r cube and what is this? It is 8/27 of volume of sphere. So we have this volume of cone is 8/27. 8/27 into वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. मैंने क्या किया, जो वॉल्यूम की वैल्यू हमने निकाली थी v की वैल्यू, उसमें मैंने x की वैल्यू r/3 की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी और इसको सिंप्लीफाई करके ये प्रूव कर दिया कि जो कोन का वॉल्यूम है वो 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, राइट? सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 था. नाउ let us do the question number 24. The question number 24 is, show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base. Means you have a right circular cone. So I am drawing this right circular cone here. Let this is a right circular cone, let this is the height of the cone and let this is the radius and this is the slant height of the cone, right? So you have, पहले आपने ये देखना है कि इसमें क्या प्रूव करना है. मीन्स लीस्ट कर्व्ड सरफेस,
यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया को आपने मिनिमम प्रूव करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने मिनिमम प्रूव करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, राइट। इसको आपने मिनिमम प्रूव करना है। और इसमें गिवन क्या है आपके पास? गिवन आपके पास है, इट इज गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम इज गिवन टू यू। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। और हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मेरे पास बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। सो मैं यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ पे h, सॉरी वी हैव, यहाँ से h की वैल्यू निकाल के फाइंड h फ्रॉम दिस वॉल्यूम दी 3v ओवर पाई आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा 9v स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर पावर 4। ये वाली वैल्यू इसमें फिल करनी है। तो मेरे पास एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर दी पावर 4। तो ये जो वैल्यू एल स्क्वायर है इसको मैं यूज करूंगा दिस इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। इक्वेशन नंबर 1 क्या है जिसको आपने मिनिमम प्रूव करना है, राइट। सो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस में स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, कुछ में नहीं करनी पड़ती है, तो ये आपको देखना है। देखिए लीस्ट कर्व्ड सरफेस मीन दिस कर्व्ड सरफेस एरिया को लीस्ट प्रूव करना है। तो मतलब इस S को आपने एक वेरिएबल में लेके आना है। तो इसमें 2 वेरिएबल ऑलरेडी हैं, एक वेरिएबल h हो गया, तो आपके पास 3 वेरिएबल यहाँ पे हैं। तो ये बनेगा, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, राइट। तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो मेरे पास बना पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब क्या है, अब जो हमने एल स्क्वायर की वैल्यू निकाली है वो इसमें फिल कर देंगे ताकि ये एक वेरिएबल में आ जाए, और जब एक वेरिएबल में आ गया तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सो वी हैव दिस, लेट दिस इज जेड। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी स्क्वायर को जेड मान लिया था, तो से दिस इज जेड। सो वी हैव पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर की वैल्यू मैं फिल कर रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर दी पावर 4, राइट। Now when we simplify this, open this bracket, we have pi square r power 4, or you can take LCM as you wish. You can take LCM here. So this is pi square r square. When we have the LCM, pi square r power 6 plus 9v square over pi square r power 4. So this pi square is cancelled, r square is cancelled. So we have this, when we separate them, we get pi square r power 4 plus 9v square over r square, right. So this is the value of z. Now it is ready to differentiate because this becomes in one variable. ये एक वेरिएबल में आपके पास आ चुका है। So जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, राइट। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट इट अगेन, व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस जेड dz by विद रिस्पेक्ट टू r, है ना, विद रिस्पेक्ट टू r। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, और इसका डेरिवेटिव आपको पता है, दिस इज, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, आर स्क्वायर है, आर को ऊपर ले जाओ -2, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 r पावर -3, राइट, मींस -2 अपॉन r क्यूब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सो -18v
ये बन जाएगा -18v/r³, राइट। सो ये z है, इसका डेरिवेटिव इतना आया, यानी कि हम इस z को मिनिमम प्रूव करेंगे। We have to prove this z as minimum, so automatically you can show it that this volume is this curved surface area is the least, means minimum. So let us equate 0 के इक्वल करो इसको। When we equate it to 0, we have 4 pi square r³, it is equal to 18v/r³. So when we simplify this, this is 4, this is 4, it is v square, I think, है ना, it is v square. So this is 4 pi square r⁴ is equal to 18v square. So when we simplify this, this is 2, this is 9, so the value of r, this is you can put the value of, you can find the value of v here. So this value is 2 pi square r⁴/9. This is the value of v square, right? So when we put this value of v square in this equation, there is a result. Means you have to prove that the altitude is equal to √2 times the radius of the base. Okay, this is v square. You have to put this value of v square in this equation, this one. We have L square equal to r square plus 9 into 2 pi square 9 into 2 pi square r⁴ over 9 into pi square r⁴. This pi square is cancelled, this 9 is cancelled out, r⁴ is cancelled out, so we have L square equal to 3r square. So when we put this value of L square in this equation, this equation, so we have h square is equal to 2r square, and therefore h is equal to √2r. So this is our result. We have to show that the altitude of this cone is √2 times the radius of the cone. And one more thing you can prove to prove it, that by finding the double derivative, you have to prove that this has least curved surface area. So when we differentiate it again, we have d square z over dr square, that is equal to 12 pi square r square, and it is plus 18/3, this is 54 v square r⁴. So I think it is clear to you. You can differentiate it easily. This differentiation is this one, 12 pi square r square, and its differentiation is 54 v square r⁴. This whole term, this is positive. Why this is positive? Because r square is positive, r⁴ is positive, v is always positive, so that's why this whole term is positive. So it shows that z is minimum. Z is minimum means its curved surface area is least. Least means minimum. So we have this result, and secondly you have to prove this as least curved surface area.